Assalamu alaikum, welcome back once again with Parts of Speech. This is me, your host Ahmad Shah, and dear friends, today we are going to discuss the usage of preposition in. प्यारे दोस्तों, आज हम इनके इस्तेमालात को पढ़ेंगे कि इनके कितने यूजेज होते हैं। इनके बड़ा यूजेज होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा ही इस्तेमालात होते हैं, लेकिन उनमें से हम आज 8-9 यूजेज है उसको पढ़ लेंगे कि इनको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन विद द बाउंड्री ऑफ स्पेस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ समथिंग इज इन अ सर्कल और इन अ बाउंड्री, जब कोई चीज़ मिसाल के तौर पर किसी बाउंड्री में है या किसी सर्कल में है, एंड दैट टाइम वी यूज इन। फॉर एग्जाम्पल, in class or in classroom or in room or in rickshaw, in car, in bus or in train, etc. जब इन चीज़ों में कोई चीज़ हो या कोई शख्स हो, जब हम उसकी इंडिकेशन करते हैं तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा इसके जो दूसरा इस्तेमाल है, यूजेज नंबर 2, फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ एनी कंट्री और एनी सिटी और द टाउन। For example, in America, in UK, in Pakistan or Afghanistan, okay? We can use in. For example, or someone is in a city. For example, I'm in Hernai, I'm in Quetta, okay? Or in any town, I'm in town, मैं कस्बे में हूँ, okay? Or usage number 3 of in, we can use the in with the name of seasons, okay? We can also use the in with seasons, name of seasons. For example, in summer, in winter, or in autumn, or in rain, etc. Maybe any season we can use in, okay? We can use in. Usage number 4, we can use in with suits or dress. हम ड्रेस के लिए या सूट्स के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह, इन कोट और इन पेंट कोट और इन शर्ट और इन किट और इन शलवार कमीज, etc. Okay, we can use with suit and dress. Usage number 5, we can use before the month's name, okay? Before the month's name in comes. For example, in January, in February or in March, we can use in before the name of months. Okay, and usage number 6, we can use before year, okay? हम साल से पहले जब साल का वो करते हैं, for example, in 2010, in 2015, in 2011 or in 2023 or 4, okay? So we can use in with also year before the year's name, okay? And usage number 7, in is also used with the situations, okay? For example, I'm in difficulties, I'm in bad situation, I'm in hot water. We can use in with the also situations. And usage number 8, we can also use the in with the parts of days. हम दिन के या दिनों के जो औकात होते हैं उनके साथ भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग और वगैरह वगैरह, हम इनको पार्ट्स ऑफ डेज के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चंद इस्तेमालात समझ में आए होंगे। इसी तरह हम और भी इन द जग, इन द बाथरूम और इन सिटी और इन ग्लास और इन ऑफिस, okay, in the bazaar or in any other country, in continent, okay, or in school, we may use with a lot of things. The usage of in is so comprehensive or wide, okay? इसके जो इस्तेमालात है इनके, ये बहुत ही वसी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि इसको हम बाउंड्री ऑफ स्पेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम ऑफ एनी कंट्री और सिटी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, नेम ऑफ सीजन्स के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह इनको हम सूट्स के साथ या ड्रेस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जो पिशन होता है। इसी तरह बिफोर मंथ्स नेम हम इस्तेमाल करते हैं,
या before years name, सालों के जो नाम होते हैं उससे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी तरह with situations we can use. इसी तरह with the parts of days we can use. Okay, these are some usage of in. There may be a lot of usage of in, but some of them I discussed in front of you, before you. So hope that you got these usage of in. Inshallah, see you something more in the next lecture. Goodbye.